स्वागत है तुम्हारा। आज खोलेंगे मैथ्स का पिटारा, बजाएंगे HCF का ढोलक। मैं हूँ योर मास्टर टीचर अमित मोदक। Very, very welcome to this amazing video session, students. We are going to study today HCF and LCM. That's a very, very common topic, although every time lot of questions comes from this topic, and you can not just avoid this chapter, you cannot eliminate this chapter from your syllabus or from your preparations, because this chapter plays a very much important role in your preparations. So today I will be talking about the HCF and LCM, which would be comprising of your grade 5 and 6 mathematics. तो आज हमारा शुरुआत होगा लेक्चर 1 एंड मैं ऐसे ही वीडियोस पार्ट बाय पार्ट डालता जाऊंगा सो दैट यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। ठीक है, चलो फिर। सो HCF एंड LCM में हम लोग पढ़ने वाले क्या? ओके, तो सबसे पहले HCF LCM को तो हम लोग समझेंगे ही, बट उससे उस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी known to us, because it makes very easy sometimes to divide the things without actually dividing. Okay, so divisibility, we can get to know that whether a number is going to be divisible by another number without actually dividing. तो ये भी बहुत काम की चीज है, ठीक है। और ultimately will be learning also methods to solve HCF, कैसे हम लोग HCF निकाल सकते हैं, कैसे LCM निकाल सकते हैं, all the things will be covering up. तो without much delay, ठीक है, pull up your socks and let's get started with first the topic is divisibility of numbers. भाई डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, हम लोग को क्या करना है? एक्चुअल डिवीजन नहीं करना, हमें चेक करना है कि क्या कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं। कई बार हमें पता करना होता है, कई बार हमें सॉल्व करना होता है, तो ये तो पता नहीं चलता है कि डिवाइड होगा या नहीं होगा, करने बैठ जाते हैं और फिर कहीं का ना कहीं फंस जाते हैं। सो वी कैन बी श्योर विदाउट डूइंग एक्चुअल डिविजन, वी कैन नो whether a number is being divisible by the another number or not. So सबसे पहले इसमें आते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। कैसे हमें पता चलेगा कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर दे दे विदाउट डूइंग एक्चुअल डिविजन, कैसे पता चल जाए कि क्या वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? सो फॉर दैट जो ब्रह्मास्त्र है वो ये है कि विल बी लुकिंग इनटू द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। जैसे 3240 है तो इसके लास्ट डिजिट पे फोकस करेंगे, इसके लास्ट डिजिट पे। ओके, विल जस्ट फोकस ऑन द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस पे फोकस करेंगे। नंबर क्यों ना कितना भी बड़ा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी विल जस्ट लुक इनटू द लास्ट डिजिट। और लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए? जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए इवन, और इवन मतलब जो 2 की टेबल में आता हो या 2 से डिविजिबल होता है, राइट? या फिर कह सकते हैं कि 0 आ जाए इसमें। तो ऐसे भी कह सकते हैं इसको, गोलमोल के तौर के बजाय हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि भाई सिंपल सा कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इन 5 नंबर्स के अलावा कुछ भी हो जाए वो डिविजिबल नहीं होगा। बट अगर इन पांचों में से कोई भी आ जाए यूनिट प्लेस पे, सो दैट विल बी डिविजिबल बाय 2। चलो, तो डिविजिबिलिटी बाय 2 खत्म। नेक्स्ट आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। कैसे पता चलेगा कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है? सो फॉर दैट व्हाट विल चेक द होल नंबर। इस बार यूनिट डिजिट नहीं देखेंगे, इस बार पूरे नंबर को देखेंगे। पूरा नंबर क्या है? जैसे 3246,
अब अपन क्या करें इसमें, 3 प्लस सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, कितना आता है सम? 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 6 इज 15। अब ये जो हमारा आ रहा है सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, ये देखना है दैट वेदर इट इज बीइंग डिविजिबल बाय 3 और नॉट। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो डिविजिबिलिटी परीक्षा है 3 के लिए, तो बस क्या करना है, नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। जैसे यहाँ पे हमारा सम आ रहा है 15, अब ये तो डिविजिबल होता है, 15 इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब कंफर्मेशन हो गया कि 3246 जो है डिविजिबल है 3 से। 4122 पे चेक करते हैं, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 2 इज 9, बिल्कुल ये भी हमारा डिविजिबल है। लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं 3571, चेक करते हैं, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15 प्लस 1 16, नहीं है ये, बिकॉज वी आर गेटिंग 16, इट्स नॉट बीइंग डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 से डिविजिबिलिटी है या नहीं कैसे चेक करें? तो 2 से हमने क्या देखा था, यूनिट प्लेस पे देखा था। डिविजिबिलिटी बाय 4 जब भी आए ना, तो हम लोग यूनिट और टेंस दो प्लेसेस पे ध्यान देंगे, यूनिट एंड टेंस। सो लास्ट 2 डिजिट पे ध्यान देंगे, दैट इज वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस। अब वो जो दो नंबर होगा, दैट 2 डिजिट नंबर जो आएगा टेंस और वंस प्लेस में, दैट शुड बी आइदर डिविजिबल बाय 4 समझ लो, या फिर दोनों 0 हो जाए। ओके, लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज आइदर 0 0 हो जाए, या फिर वो दो डिजिट ऐसे हो दैट शुड बी डिविजिबल बाय 4, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब जैसे मैं नाम ऐसा एक नंबर ले लेता हूँ 1 4 3 6 9 7 3 2, इतना बड़ा सा नंबर ले, अब ये डिविजिबल है या नहीं 4? सो उसके लिए हम लोग देखेंगे बस किस पे, लास्ट 2 डिजिट पे। अब जैसे कि हमें दिख रहा है 32, अब 32 4 के टेबल पे आता है। ओके, 32 is divisible by 4, 4 8 जो 32, so therefore this number is divisible। देखो हमने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया, बट पता चल गया कि ये 4 से डिविजिबल है। That is what the divisibility of numbers is. Next, divisibility test किसके लिए? 5 के लिए। सो 5 के लिए बहुत ही सिंपल, कि अगर हम लोग लास्ट डिजिट पे फोकस करेंगे, अगर वो 0 आता है या 5 आता है, अगर हमारा लास्ट डिजिट 0 आता है या 5 आता है, देन इट इज डिविजिबल बाय 5। जैसे 1350 1355, लास्ट डिजिट को देखो, 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है, 0 हो या फिर 5 हो, सो ऑल दीज आर डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 के लिए क्या होगा? व्हाट शुड वी यूज द ट्रिक टू गेट द डिविजिबिलिटी ऑफ 6? कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए होगा हमारा नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2, 2 से होना चाहिए, और 2 के लिए हमें क्या देखना है, लास्ट डिजिट पे, कि क्या वो 0 2 4 6 8 में से कुछ हो, एंड ये भी साथ साथ देखना है ये इट शुड बी डिविजिबल बाय 3 आल्सो, और 3 के लिए क्या करना है, सम कर देना है। ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास 3 2 4 6 9 6 है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 6 होने के लिए दोनों से होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए एंड 3 से भी ये डिविजिबल होना चाहिए। 2 से चेक करने के लिए यूनिट डिजिट पे देखेंगे, यूनिट डिजिट सिंपली हमें दिख रहा है कि ये 6 है भाई, और 6 है, 6 है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। और अगर हमें 3 से चेक कर रहे हैं तो क्या करना है, 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 6, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, हमें ऐड करके देखते हैं हम लोग कितना आता है। 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 6 15, 15, और इधर 9 प्लस 6 15, 15 और 15 30, बिल्कुल 3 से डिविजिबल है। सो ये हमारा डिविजिबिलिटी बाय 6 होगा। ठीक है, होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7। 7 पे देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या काम करते हैं। सो जब हम लोग 7 की बात करें तो हमें क्या करना है, ध्यान देना है कुछ चीजों को, कुछ स्टेप्स को ध्यान रखना है। क्या करना है,
सबसे पहले वंस प्लेस पे, जैसे ये हमारा 2401, इसके वंस प्लेस पे जो भी डिजिट है, वंस प्लेस पे ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, वंस प्लेस पे जो भी हमारा डिजिट हो, ओके, उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। क्या करना है, डबल द डिजिट एट वंस प्लेस। तो 1 को बना देंगे 1 इंटू 2, 2 बन गया। नाउ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस स्टेप। ठीक है, क्या ऑब्टेन किए हम लोग भाई, 2 ऑब्टेन किए, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड या फॉर्म्ड बाय रेस्ट ऑफ डिजिट। तो 1 को तो हम लोग हटा के डबल करने गए, बच गया कौन, 240। अब 240 से जो प्रीवियस स्टेप में जो हमें नंबर मिला ना 2, इससे माइनस करना है, तो आएगा कितना, 238। अब पिक्चर बाकी है, 238 आने के बाद फिर से हम लोग को देखना है लास्ट वंस डिजिट पे, और वंस डिजिट को करना क्या है, डबल करना है। तो 8 का डबल हो जाएगा 16। अब बचा कुचा जो नंबर है 23, इससे इसको माइनस करना है, आएगा 7। सो अगर 7 आ रहा है या फिर 7 आ रहा है या फिर कोई भी ऐसा नंबर हो, कोई भी ऐसा नंबर हो, ओके, जो 7 से डिविजिबल हो, कोई भी ऐसा नंबर हो जो 7 से डिविजिबल हो, so then we can say that it is also being divisible by 7। जैसे यहाँ पे हमारा 7 आ रहा है, तो अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है तो बिल्कुल वो डिविजिबल होगा 7 से। ऑलराइट, तो हम लोग को तब तक चलते जाना है, जो सब्ट्रैक्शन है वो प्रोसेस को तब तक चलाते जाना है जब तक हमें ऐसा कोई नंबर ना मिल जाए जो 7 के मल्टीपल्स में हो या 7 से डिवाइड होता हो। अगर नहीं मिलता है, अगर ऐसा नहीं मिलता है, लास्ट तक चलते चलते नहीं मिलता है, उसका मतलब इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, नेक्स्ट कम्स डिविजिबिलिटी ऑफ 8। तो याद करो, हमने सीखा 2 के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे ध्यान देते थे। उसके बाद मैंने कहा भाई 4 के लिए देखो लास्ट के 2 डिजिट मींस यूनिट और वो टेंस प्लेस। अब आता है 8 की बारी, तो 8 की बारी जब आता है तो हम लोग लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे और ये देखेंगे क्या वो 0 है या फिर जो 3 डिजिट आ रहे हैं क्या वो 8 से डिविजिबल है। अगर है सो नंबर विल बी डिविजिबल। जैसे यहाँ पे हमारे पास लास्ट 3 डिजिट कितना आ रहा है, 000, चलेगा। यहाँ कितना आ रहा है, 416। अब अपन क्या करें, 416 को 8 से डिवाइड करो, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 9 पे। अब 9 पे लिए ध्यान रखना, 3 का याद करो, क्या था 3 के लिए, कि सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक उसी तरह से, बिल्कुल ठीक उसी तरह से याद रखना है, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 के लिए जो सम होगा सारे डिजिट्स का उसको डिवाइड कर दो 9 से। अब जैसे 8 9 3 7, 8 प्लस 9 इज 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 7 27, 27 9 से डिवाइड होता है, सो 8937 डिविजिबल होगा। ओके, एंड लास्टली हम लोग यूज कर सकते हैं 10 के लिए। ठीक है, तो 10 के लिए हमारा हो जाएगा बहुत ही सिंपल, लास्ट डिजिट, बहुत ही इजी एकदम सिंपल पीस ऑफ केक जिसको कहेंगे, फटाफट से आंसर आ सकता है। जब भी दिख जाए कि भाई लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस में 0 है, मींस वो 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंट वाला हम लोग देखते हैं, एक हम लोग एक्स्ट्रा देखेंगे 11 के लिए भी। तो हमने देखा 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए और 10 के लिए भी हमने देखी। अब देखते हैं 11 के लिए। 11 के लिए क्या है कि अगर बड़ा सा नंबर देख लिए और बोलेगा बताओ भाई डिविजिबल है या नहीं 11 से, तो डरने का नहीं, क्या करने का, हमें करना है उसके पोजीशंस को पहले आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, क्या करना है, पोजीशंस। तो ये क्या है, उसके पोजीशंस, जैसे ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये डिजिट थर्ड पे, ये हमारा फिफ्थ पे है, ये सिक्स्थ पे। ठीक है, तो उसके जो बच गए वो कौन से पोजीशन हो गए,
जैसे ये सेकेंड पोजीशन पे, ये फोर्थ, ये सिक्स और ये एट्थ। तो करना क्या है कि सारे इवन प्लेसेस, ठीक है, और ऑड प्लेसेस का सम कर डालना है। ठीक है, सारे ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम कर देना है। ठीक है, तो कर लेते हैं भाई। 4 + 0 + 1, ठीक है, 5, 5 + 3 कितना आ गया 8। ठीक है, तो मैंने कहा 4 + 0 + 1 + 3 माइनस, अब इवन प्लेसेस देख लो, 2, 2, 3 और 1 है। 2 + 2 + 3 + 1, क्या करें, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 माइनस 2 + 2 4, 4 + 3 7 + 1 8, आ गया 0। So if we get a 0, either a 0 or a number that is divisible by 11, so divisibility by 11 हमारा check हो गया। Alright, so this is how we can understand, how we can see whether a number is being divisible by another number or not. So specifically we can see 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. So out of these numbers, if it comes, we can get the idea whether it is being divisible or not. Okay, so let's get started with some quizzes. First question, the number with unit digits 0 or 5 is divisible by. So we will be taking it up a rapid fire. So you will be writing on the chat box, on the comment box. Okay, so the number with unit 0 or 5 is divisible by. Starting 3, 2, 1. So let's reveal the answer. Yes, it's 5. Next question on your screen. The number with the unit digit 0, 2, 4, 6 or 8 is divisible by. Starting in 5, 4, 3, 2, 1. Let's see the answer. Yes, 2 is correct. Okay. So for the divisibility of 2, we have to check the unit place. That should be either a 0, 2, 4, 6 or 8. Next question. 3681 is divisible by. Your options are 4, 5, 9 and 10. Quickly you can answer 3681. Within 15 seconds you can answer. Within 15 seconds you can answer. Okay, so let's look into the answer. Answer is 9. Now, for the divisibility by 4, we need to have a number, 2-digit number, that is 81. It should be divisible by 4, which is not. So it's not. 4 is not the answer. Next, for the 5, even place, the unit place should be 0 or 5. It is not there. So it will be not working. For 10, the unit place should be 0. It's not there. So it's also not working. So only the option we have is 9. Which of the following is not divisible by 3? Come on. Just remember the trick. How we can get the idea whether it's being divisible by 3 or not. Alright, so looking into the answer in 3, 2, 1, here we have. The answer is 3902. So if you make a sum of it, 3 plus 9 is 12, 12 plus 2 is 14. 14 is not divisible by 3. Let's move on to the next question. Which of the following number is divisible by 9? Which of the number is divisible by 9? Alright, so let's look into the answer. 3510 is not is divisible by 9. So we can make it the sum. 3 plus 5 is 8, 8 plus 1 is 9, 9 plus 0 is 9. So 9 is divisible by 9, so therefore it's answer. Alright, so now let's come to the next thing to be understood is your factors. Now what is factor? Factor means a number is getting divided directly by another number and it is dividing it completely, right?
the number is getting divided exactly. That means there is no remainder leaving. Okay. So if we look into some of the properties of the factors, 1 is a factor of every number. Every number is a factor of itself. A factor is either less than or equal to the given number, and a number as a finite number of factors, and every number other than 1 has at least two factors, namely 1 and the number itself. So whatever the number we take, every time two numbers are fixed for their factor, that's 1 and the number itself. Okay, let's move and understand. For example, let's say if we have a number like 20. Now 20 is being divisible by 1, 2, 4, 5, 10, 20. So all these are basically the factors. Now out of this 1 and 20 is the always the factor. Okay, that will be always be there. Apart from that, we can have other numbers or may not also. So we'll look into that part also. Okay, so 1, 2, 4, 5, 10 and 20 are the factors of 20. That means they can divide the given number, that is 20. Next comes multiples. Now what is multiples? Multiples means when a given number is being multiplied by another number and the product is being obtained, which is called to be as multiple of both the numbers. They are multiples of each other. All right, so we have some properties again. A number is multiple of each of its factors. Okay, the number is definitely the multiple of its factors. Next, every number is a multiple of itself. Definitely, every number is a multiple of one itself. Okay, multiple of a number is either equal or greater than number. Obvious that multiple of any number is either the equal or it is being greater. Next, every number has a infinite number of multiples, because if we talk about the factors, it's finite, but when we talk about multiples, it gets multiplying, multiplying, and so on. So we do not have a definite number of multiples. It's indefinite, or we can say infinite. Next, an example again, like 20 is being divisible. Okay, so 20 is being divisible by these numbers. Now they are called to be as factors, but we can also say that 20 is a multiple, because in the table of 1, 20 comes, in a table of 2, 20 comes, 4, 5, 10, 20. In each of the table, your 20 comes. So we can also say that 20 is a multiple of all these numbers. Next, prime and composite number. Now what is this prime number and composite number? So number that has exactly two factors. If a number is there and having exactly two factors is said to be as prime number, like 3, 5, 11, 13, 29. They have only two factors, that is the number itself and 1. 1 and number itself. Okay, let's say if I say 5. 5 has a factor of 1 and 5 itself only. Okay, now the numbers with 3 or more factors are called as composite numbers. All right, so they are said to be as composite number. That means the numbers having 3 or more factors, and the numbers having exactly two factors are called to be as prime numbers. Next comes co-prime. Now what is co-prime numbers? Co-prime numbers means they have HCF as one, or we will look into that later part, HCF what it is, but we can say that they do not have any common factor other than 1, means the two numbers will be only divisible by 1. Okay, that two numbers said to be as co-prime. Let's say if I say 2 and 3. Now these are two prime numbers and they do not get divided by any common number except 1. One can divide both.
But apart from that, we do not have any number which can divide these two numbers. So they are said to be as co-prime. Next comes twin primes. Twin primes means the two prime numbers which have 2 as a difference. They need to have a 2 as a difference. Like we have 3, 5, the difference is 2. 5, 7, 11, 13, they are said to be as twin primes. Their difference should be the 2. Alright. Now let's come to the common factors. Now what is this common factors? Now we have understood what the factors are. Factors are basically the numbers which can divide the given number. Now let's say we are finding the factors of 10. Now definitely the factors of 10 are 1, 2, 5 and 10. And similarly for 12 the factors are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Now out of these two we can see some factors are there which is common to both. 1 is there and 2 is there. So we observe that the common factors to be called here as 1 and 2. Similarly, if we want to see for 20 and 32, okay, let's look. So at 20, it's 1, 2, 4, 5, 10 and 20. Similarly, for 32, 1, 2, 4, 8, 16 and 32. Now, what is the common one? 1 is common, 2 is common and 4 is common. These are the common factors, means 4 can divide 20 as well as 32. 2 can divide 20 as well 32. So that's common factors. So let's get started with the quizzes now. The only even prime number is, you can answer rapidly on the comment box. 3, 2, 1. Let's see. The right answer is 2. The only even prime number is 2. Next, number obtained by multiplying the first 3 prime numbers. What is going to be the answer? The number obtained by multiplying 3 prime numbers. Okay, so let's have the answer please. 30. That is 2 is the first prime number, then 3 and then 5. So 2 3 is 6, 5 is 30. Next comes, which of the following is a composite number? Which of the following is a composite? Composite means having more than 2 factors. Okay, so 3, 2, 1. Let's look into the answer is B21. That's correct. Next, a prime number has only dash factors. How many factors? Yes, your answer is very correct. That's 2. Okay. Next comes prime factors. Now, what does prime factors? Prime. Now we have understood factors. Factors means that the numbers get divided, that divides the another number, right? So those are the factors. Now, out of those numbers which divides another number, out of those numbers, if we check, some of them are prime in nature. Okay, some are of them as prime nature. So another category has been found as prime factors, means we will take the factors of a number which are prime. Okay, like 12 has a factors of 1, 2, 3, 4, 6 and 12, but we cannot take all them up as prime factors. We can only say 2 out of it, then we can say 3 and that's it. 2 and 3 are only the prime factors of 12. Okay, and these prime factors are very helpful. So every composite number, there's a rule that every composite number can be expressed as the product of its prime factors. Make sure this line, every composite number can be written as the product of its prime factors. Okay, whether it's 12 can be written as 1 into 2 into 2, okay, into 3.
That means we are taking the prime numbers 2, 2 and 3. So the process of representing the composite number as product of factors is known as prime factorization. Okay, the process of representing the composite number as a product of its prime factors is known as prime factorization. Let's look what we can do to find the prime factorization, how we can find the prime factorization. So if we look into the 36, we can see here the factors 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12, 4 into 9, 6 into 6, 2 into 2 into 9, 2 into 2 into 3 into 3. That means we can see that lot of factorization has been done, but all are not the prime numbers. Okay, 18, 12, 36, 12, 9, 4, these are not the prime numbers. So only the factorization consisting of the prime numbers, which was 2 into 2 into 3 into 3, that gives 2 2s are 4 3s are 12, 12 3s are 36. So definitely we get the prime factorization of 36 as 2 into 2 into 3 into 3. Okay, so let us students learn now the prime factorization by two methods. Okay, so let us understand how we can do by two different methods. First is division method, that is we can divide the numbers like 56. Okay, 56, we want to find the prime factorization of this. So 56 could be written like this way. Okay, this is called as division method. Now here we'll take the prime numbers. So first of all, let me take 2. So what I will get, 2 2s are 4, 2 8s are 16. We'll write the quotient here. Once again, we'll divide with a prime number. 2 1s are 2 4s. And least prime number is mostly preferred. Okay, least prime numbers. 240, then 2, 7. And finally, we can cancel it with 7 1s are. So what we get is 2 into 2 into 7. 3 times we got a 2 and 1 times 7. So that is what your prime factorization by division method. Okay, next is your factor tree method. Now in factor tree method, what we do is basically like suppose let's say we have a 48 number. Okay, now what we do will we'll just write the two multiples of it, right? 2 into 24, then 24 gets again divided 2 into 12, 12 gets divided 2 into 6 and 6 gets 2 into 3. So here also if we check it out, how many numbers we can see as a prime numbers, and being the factor of this 48, so that's 2 into 2 into 2 into 2 into 3. So this is going to be the prime factorization by tree method. So let's see some examples here. Suppose the factors of 15, that's very simple. We can write 1, 3, 5 and 15. Okay, similarly the factors of 108 we can think of like 1 2, and this is becoming easy by getting the concept of divisibility. So 1 2 3 4 6 9 12 18 27 36 54 and 108. So many, right? So many factors. Okay, so after understanding this, let's have a quiz. So considering the prime factorization, the prime factors of 450 are, considering the prime factorization, the prime factors of 450 are. Do it, students. What should be the prime factorization of the, by taking the prime factors of 450? All right. So let's look into the answer. So right answer is first one. So 450. What will do? Prime factorization by the division method. So taking the least prime numbers, so since it's a 0 in the unit place, we can take 0. We can take 2. So 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10. Next, 5 is there, so we can take 5. Okay. Or we can take 3 also. Okay. So 5 4s are 20, 5 5s are 25. Then 5 9s are, and then we can take 3 3s are
and we can multiply and make it. So what I am getting, 2 into 5 into 5 into 3 into 3. That means 2 times 5 we are getting, 2 times 3 we are getting, and 1 time 2 is getting. Okay, so very well done. Next question, find the product of all the factors of 40. Find the product of all the factors of 40. Do it. Alright, let's look into the answer. B option. So factors of 40, as you all know, 1 and 2, 1, 2, 4, 5, 8, 10, then 10, then we have 20 and 40. So product of all the factors. That means 1 into 2 into 4 into 5 into 8 into 10 into 20 into 40. That is being asked. Now will be able to multiply? Yes, definitely. Why not? So we'll think of the tricks how we can do it easier way. So here we can see 3 zeros are being already there. Okay. So let's write 1000 for these 3 zeros. Okay. So 2 fours are 8, 8 fives are 40. Okay. 2 fours are 8, 8 fives are 40. 40 into 8. 40 into 8 means 320. 2 fours are 8, 8 fives are 40, 40 into 8, 8 fours are 32 and 0. Into, still we have a 1 because 0 has been taken here. 1 into 2 into 4. Okay. So we'll just multiply once again. 4 twos are 8. 4 to the 8, 8 multiplies with 320. So 8 zeros are 0. 8 twos are 16, carry 1. 8 threes are 24 and carry 1. 25. 2560 into 1000. That can be rearranged as 256 into 10,000. So that's why the correct answer is 2. Okay. Sure. So let us learn about HCF and LCM methods to find. Now, this will become a little bit heavy to take so much. Okay, so we will be coming back with the ways to find HCF and LCM in the next video. Till the time you will practice that whether we can check the divisibility of numbers and how we can check the divisibility of 1, 2, 1 is fine enough, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So all these number divisibility process we checked. Then we also understood that what are the factors, what is called to be as factor, what is a multiple, what are prime numbers, what are composite number, what are twin primes, what are co-prime. All these things have been learned today. So revise them. We'll be understanding the HCF process to find the HCF, what is HCF, what is LCM, how to find the LCM in the next video. Okay, till then, see you in the next video. Bye bye, take care, and please do subscribe the channel, students. It will be very beneficial for you. Till then, bye bye.